हेलो, नमस्कार, वेलकम एक्सपायरी की बात में आप सभी का स्वागत है। तो past 2 days have been quite volatile for the markets. On Friday, we witnessed a big up move, and today we've given up all the gains. In fact, यदि आप चार्ट देखेंगे तो 3 दिन में जो हमने रैली किया था 25,900 से लेके 26,180 के आसपास तक का, वो एक ही दिन में the market has given up all its gains. Secondly, from levels perspective, again you've kind of come to where we started the December series. So यानी कि December series की शुरुआत हमने 25,900 के आसपास ही करी थी, एंड अभी हम दोबारा उसी लेवल पे आके अटके हैं. I think it's very important to have multiple time frames का view very clear in your mind, because that gives you a broader thought process. Because कई बार छोटे टाइम फ्रेम में हमारा व्यू थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के हिसाब से बायस्ड हो सकता है. बट आई थिंक एक थोड़ा सा जैसे आई प्रेफर टेकिंग द मंथली व्यू एज वेल ऑलवेज इन टू कीप इट इन माय माइंड बिफोर आई इनिशिएट एनी पोजीशंस, एंड खास करके ऑप्शन राइटिंग पोजीशंस, बिकॉज शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के बेसिस पे यू डोंट रियली वांट टू गेट swept away in taking decisions which could impact your overall thought process and trading setup. शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक्सपायरी की बात की. मल्टीपल पैरामीटर्स को टच अपॉन करेंगे. मेरा जो मंथली व्यू है, जो वीकली सेटअप है, वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा. These are some relevant disclaimers. Yes, so some pointers. I think all-time high पे आने के बाद में we witness some selling pressure. 2-3 points supporting that. One is, even when you are at all-time high, I think as a trader, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा एज एन एनालिस्ट. व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज कि वो जो थ्रस्ट आना चाहिए मार्केट में, जो एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, जो फ्रेश बाइंग आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. इनफैक्ट मार्केट बहुत ही पोलराइज्ड है, जहां पे फ्रंटलाइन स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं, बट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कंटिन्यूस बेसिस पर सेलिंग आ रही है. आपका लॉन्ग रेशियो जो एफआई का है, दैट इज आल्सो अराउंड 13.75%. दैट मींस अभी भी राउंडेड अप 86% पोजीशंस जो है एफआई की, वो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पर है, सिर्फ 14% लॉन्ग साइड पे है. अगेन नॉर्मली इन अ बुलिश अंडरटोन, अगर आप ऑल टाइम हाई के पास हो तो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट सच अ सिचुएशन टू हैपन. जो मंथली का सेटअप है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का यदि देखना हो तो दैट इज स्टिल न्यूट्रल टू पॉजिटिव. वी मेंटेन द स्टैंस सिंस द इंसेप्शन ऑफ द सीरीज के अभी के लिए कोई आपका ऐसा टेक्निकल सेटअप या आपका ऑप्शंस का डेटा सजेस्ट नहीं कर रहा है कि कुछ बड़ा ब्रीच हो या बड़ा करेक्शन आने का स्कोप है. बट अगेन, as a trader, your entry point is extremely important. So Nifty back to its expiry level 25,900 plus minus is a reasonably good entry point. Now again, an entry point demands a risk definition as well. So in our understanding, a combination of multiple parameters फिलहाल के लिए भी जब तक 25,600 सस्टेन करके रखा है बाजार ने, तब तक there is nothing to worry about. It could be a sideways movement market. पॉजिटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए थोड़ी कम लग रही है, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स जो है उनमें हमें कंफर्ट देखने को मिल रहा है. कहीं पे भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग में ऐसी कोई एग्रेसिव कवरिंग देखने को नहीं मिल रही है. सो आई थिंक अ हेज्ड long position does make sense at this point of time. Maybe it could be a collar or a covered call, so that the theta decay works in your benefit when the momentum aspect of the market is missing and the trend is neutral to positive. So broadly monthly, still believe 25,600 strong level, neutral to positive. Buying on dips is the thought process that we're working with. And broadly, we've been focusing on OTM put writing and selective call writing basis the strategy that the levels and the weekly setup that works well. आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन again, I really don't want to keep repeating the same thing, but was quite an underperformance, wherein the small cap and the Nifty mid cap, all of them down 2% on an average, some more than that. Nifty was down approximately minus 0.86%, so that's quite a loss. Sector की बात करें तो media, metal and reality were underperforming sectors, which created pressure on the broader markets, whereas IT and financial services, though they closed with losses, but relatively outperformed as compared to the broader market, which closed with a loss of around 0.86%. ऑप्शंस में क्या हुआ है आज के दिन में, यदि आप देखेंगे तो द लाइट ब्लू इज इंडिकेटिंग कॉल राइटिंग, मैसिव कॉल राइटिंग.
26,000, 26,100, 26,200 तीनों में ही open interest build-up बहुत strong हुआ है, and obviously considering the way the market is moved, this can be more or less attributed towards call writing only. जबकि put side में अगर आप देखेंगे तो the maximum relevant open interest is at 25,900. बाकी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है. तो लिमिटेड अपसाइड on the basis of the open interest build up can be interpreted at this point of time. और नीचे का यदि support level breach होता है तो then one should be nimble enough to shift the stance and expect the market to witness some kind of a further correction. Max Pain, the level is placed at 26,000 and the premium that is still yet to decay, 410 crore still premium on risk, which can decay. If Nifty closes at 26,000, all of this will become zero. Option writers will gain, option buyers will lose money. So the option writers would want the market to expire around the 26,000 mark so that the premium, the theta, the premium decay can happen and they can benefit out of the same. Since the inception of the December series, FI की एक्टिविटी क्या हुई है निफ्टी में यदि आप देखेंगे तो देयर इज कंसिस्टेंट शॉर्ट बिल्डअप, और जैसे मैंने बताया उनकी ओवरऑल सिर्फ 13.75% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे है, बाकी 86.25 इज ऑन द शॉर्ट साइड. ये महीने में भी हमें ओवरऑल शॉर्ट एडिशन ही देखने को मिला है. इंक्रीमेंटल पोजीशन क्रिएटेड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द सीरीज, राइट. बैंक निफ्टी ओवरऑल बेटर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है. अगेन सेक्टर बेस्ड डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे. अब यदि हम फर्दर डिगिंग डीपर इनटू डेटा एक्टिविटी देखें तो एफआई की हम पहले बात कर लेते हैं. शॉर्ट ऑन इंडेक्स ऑप्शंस, short on index futures. So FI remains clear cut short. Client side is long on index futures, long on index options as well. जबकि प्रो की यदि बात करें तो ओवरऑल पोजीशंस आर रादर न्यूट्रल, कोई बहुत ज्यादा स्टैंस नहीं है. सो बेसिकली इट इज FI versus client that is the force that is there in the market, one on the short side and the other one on the long side. FI का जो लॉन्ग रेशियो है जैसे मैंने बताया 13.75%, प्रीवियस सेशन से थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट देन अगेन आफ्टर दैट द मार्केट हैज विटनेस्ड अ करेक्शन इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन. ऑप्शन चेन प्रीटी इंटरेस्टिंग टुडे. ऐसा डेटा यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता है. सबसे पहले वीकली की यदि बात कर लें, ओवरऑल इंक्लूडिंग टुडेज प्रोविजनल डेटा 37.66 lakhs on the call writing side, whereas only 18 lakhs on the put writing side. So practically it is 1:2. यानी फॉर एवरी वन पुट रिटन देयर आर 2 कॉल्स सोल्ड. खास करके आज के दिन में भी 18 लाख कॉल ऑप्शंस ऐड हुए हैं, जबकि पुट में हमने कवरिंग देखी है, शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट टुडे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी. पुट राइटर्स आर नॉट कंफर्टेबल. और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको चार्ट में बताया, पुट राइटर्स ने फ्रेश स्टैंस लिया भी नहीं है, उन्होंने अपनी पोजीशंस कट ही करी है, जबकि कॉल राइटिंग एग्रेसिव साइड पे हुई है. मनी फ्लो के बेसिस पर भी यदि आप देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप ओनली ऑन द कॉल साइड. पुट एक्टिविटी हैज बीन overall rather muted. So again, call writing on a weekly basis, call writing on a daily basis. Weekly setup में the market was in a corrective basis, जो मैं charts के basis पर आपको आगे explain करूंगा. Breakout जरूर आया, but then that was followed by lack of momentum, which doesn't constitute to be a breakout, and then eventually the market continued with its corrective stance. So more or less limited upside is what we can interpret over here. But the monthly setup, as discussed, continues to remain positive with 25,600 as a strong support level. चार्ट्स को देख के हम ये सब जो हमने डेटा निकाला है इसको भी एक बार ओवरले कर लेंगे, तो we'll have a holistic view. वीकली सेटअप जो कल एक्सपायर हो जाएगा, करेक्टिव सेटअप था and monthly positive था. So put writing on the month, call writing on the weekly basis is something that has worked well. Support is placed at 25,900 odd levels, which is expiry minus 1 day ka low. In our understanding, if the monthly trend is positive, then the downside could be limited. So it could be another day of rather range bound movement, but still that's a view. Level define karna zaruri hai. 25,900 ke niche yadi hourly closing aata hai, then problem can persist. And on the higher side, not expecting too much fireworks, because the high that we made on expiry minus 1 day is 26,180. इसके ऊपर यदि जाता है तो बहुत strong कोई movement आ सकता है. Otherwise, we are expecting a range bound movement for tomorrow, right? So this is on the basis of data. Now let's just shift to the charts quickly to understand how the charts are placed and what are we reading out of the charts in our understanding.
यस, सो दिस इज द डेली चार्ट फॉर निफ्टी। तो सबसे पहले जैसे आप देखेंगे कि दिस इज द एक्सपायरी डे, प्रीवियस एक्सपायरी डे। नाउ अ करेक्टिव सेटअप हैपेंस व्हेन निफ्टी breaks the low of the expiry day, goes down, right? And after that, till the high, which is over here around 26,150, is not crossed with momentum, right? So always look at a combination, not at absolute levels. ये हाई जरूर क्रॉस किया, बट यहाँ पे इंट्राडे बेसिस में इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। यदि इस दिन का इंट्राडे चार्ट भी आप देखेंगे तो आरएसआई ओवरसोल्ड पे आखिरी मिनट पे आया था। इट वाज नॉट दैट पूरे दिन में हमें एग्रेशन और शॉर्ट कवरिंग ऐसा कुछ दिख रहा था। सो द सेटअप वाज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट एंड हेंस द करेक्टिव सेटअप ऑफ दिस लो बीइंग ब्रीच्ड कंटिन्यूड। तो इसके लिए कॉल राइटिंग वर्कड वेल एंड टुडे अगेन द मार्केट हैपेंड टू करेक्ट सिग्निफिकेंटली। आवर अंडरस्टैंडिंग इज गिवन द करंट सेटअप, ये जो आपका एंड बिकॉज मंथली सेटअप पॉजिटिव है, वी क्लोज्ड अराउंड 25,900 एंड हेंस वी बिलीव ये आपका जो 25,600 जो ब्लू लाइन है मंथली लेवल है, एंड थोड़ा और हम क्वेश्चन रख सकते हैं 25,750। दिस जोन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। सो यदि कोई ब्रेकडाउन आता भी है कल के दिन में तो द डाउनसाइड कैन बी लिमिटेड टू अराउंड 100 odd points is what our understanding at this point of time is. Having said that, 25,900 के नीचे यदि आवरली बेसिस पर सस्टेन करता है तो you have to be cautious for the day for sure. But for the month, continue to keep the support of 25,600 in place. Let's just have a quick look at the intraday charts. So this is the intraday charts for you. जैसे मैंने बताया कि आपका जो 3 दिन की रैली थी, started on the 3rd of December, 4th of December, 5th of December. From 25,900 you rallied to 26,200 approximately. In one day we've given up all the gains and come back to this level, and this level happens to be the same level जहां पे आपने expiry की शुरुआत की थी, which is around this date, which is 25th of November, right? So broadly 25,900 का ध्यान रखिए, यदि उसके नीचे सस्टेन करता है तो एक नेगेटिव बायस होने का चांस है। अदरवाइज इन आवर अंडरस्टैंडिंग रेंज बाउंड रहने के बहुत ज्यादा चांस है। एंड सेटअप क्या होगा, एक टुडे वी इनिशिएटेड अ शॉर्ट straddle 25,700 and 26,200 considering the fact that we have the view of a range bound market. और यदि 25,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है आवरली बेसिस पे, then we would prefer risk management and exiting this position, and then maybe intraday put buying का कोई setup mature होगा, RSI overbought यदि होता है, then we'll take a trade. So that's the broad stance that we have at this point of time. एक level का यदि ध्यान रखना हो तो 25,900 is a very very strong support level. उसके नीचे यदि hourly basis पर जाता है तो selling pressure आएगा, otherwise sideways range bound, because बहुत ज्यादा weekly basis पर और daily basis पर call writing हमें देखने को मिली है। That's about it from my side. Hope हमारा ये objective data driven session आपके analysis में decision making में help करता हो। कुछ भी feedback हो please हमारे साथ share कीजिए। Join करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Have a great day today and best of luck for tomorrow's trading session. Thank you so much for joining in. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.